Either or ka part 2 is about the ethical mode of existence. It is written by the pseudonym B and the judge, जो बाद में जाके एक करेक्टर में कन्वर्ट कर जाते हैं. और ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ आइदर और, ये एक सीरीज ऑफ लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है बाय द जज टू ए. द जज है वो एथिकल इंडिविजुअल है, और जो ए है, लाइक वी डिस्कस इन द लास्ट एपिसोड, वो एस्थेटिक इंडिविजुअल है. ये जो लेटर्स हैं ये रिस्पॉन्स हैं, ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं टू द राइटिंग्स ऑफ ए डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आइदर और जो जज है वो अटेम्प्ट कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू परसुएड ए के जो एथिकल लाइफ है इट इज़ बेटर दैन द प्योरली एस्थेटिक लाइफ. ही इज़ ट्राइंग टू विन हिम ओवर, बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू परसुएड हिम टू कम ओवर टू द एथिकल स्फीयर ऑफ लाइफ, जो कि एक सोशल और एक मॉरली प्रॉपर लाइफ है. लेकिन ऑन द सेम हैंड ही इज़ अवेयर कि ए जो है ही इज़ एन एस्थीट, ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आफ्टर प्लेजर, ही इज़ ऑलवेज रनिंग अवे फ्रॉम बोर्डम. तो वो उसको अपने लेटर्स के थ्रू बोर नहीं करना चाहता, बिकॉज ही इज़ श्योर दैट इफ़ ही डज दैट ही वुड बेसिकली थ्रो द लेटर्स अवे, ही वुड नॉट रीड देम. तो ही इज़ ट्राइंग टू कैच हिज अटेंशन. इसलिए ये जो जज है, ये बी जो है, ही इज़ ट्राइंग to retain his attention, so he starts with those things which he thinks might be of interest to him. So he starts with the aesthetic validity in marriage. जो aesthetic individual है ए, वो मानता है कि marriage एक limitation है. That is why he enjoys the game of romantic chasing. He enjoys the game of pursuing the things that are of interest to him, pursuing the people that are of interest to him, and then later manipulating them and leaving them heartbroken and all of that. लेकिन जो ethical individual है वो आर्ग्यू कर रहा है कि मैरिज एक एक्चुअल पोएटिक लव है विच कंसिस्ट्स ऑफ अ कंटिन्यूअल रीजुविनेशन. आप कह सकते हैं एक रीबर्थ, कंटिन्यूअल रीबर्थ ऑफ वंस फर्स्ट लव. वो एक रिग्रेटफुल बैकवर्ड ग्लांस नहीं है एट अनस्टेबल रोमांटिक लव, बट रादर अ ड्यूटी वन मस्ट फुलफिल विच इज़ अ टेस्टमेंट ऑफ रोमांस. ये जज जो है वो क्लेम कर रहा है कि जो एथिकल लाइफ ऑफ बीइंग मैरिड है वो बेहतर है एस्थेटिक लाइफ ऑफ द सेड्यूसर से. एंड सो वो ये क्लेम एक एथिकल बेसिस पे नहीं कर रहा, सिर्फ वो ये क्लेम एक एस्थेटिक बेसिस पे भी कर रहा है. वो कह रहा है कि देयर इज़ एक्चुअली मोर एस्थेटिक प्लेजर टू बी फाउंड इन अ कंसिस्टेंट मैरिज देन इन अ बैचलर लाइफ. ही बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा है बिटवीन द एथिकल फॉरवर्ड लुकिंग रेपुटेशन ऑफ द मैरिड लाइफ एंड द एस्थेटिक बैकवर्ड लुकिंग रिकलेक्शन ऑफ द कन्फर्म्ड बैचलर. ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू कन्विंस ए कि जो लाइफ ऑफ मैरिज है, बीइंग मैरिड इज़ बेटर दैन बीइंग अ बैचलर एंड जस्ट हैविंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ शॉर्ट लिव्ड अफेयर्स. एंड दैट जो प्यार आप महसूस करते हो एक मैरिज के अंदर होते हुए विद योर पार्टनर, इट इज़ एक्चुअली प्योर लव एज अपोज टू योर इन्फैचुएशंस और योर लस्ट. अब जो दूसरा लेटर है इस किताब, इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, इट proposes an equilibrium between the aesthetic and the ethical, और यही इसका नाम है, इस सेक्शन का नाम है an equilibrium between the aesthetic and the ethical. ये दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं, एस्थेटिक इंडिविजुअल और एथिकल इंडिविजुअल, बोथ ऑफ देम आर फेस्ड विद एन आइदर और सिचुएशन. दोनों की एक आइदर और सिचुएशन है विच बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंटेड विद, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट सिचुएशंस हैं. एक जो सिचुएशन है वो थोड़ी यूनिक सिचुएशन है जो वो बयान करता है इन द फर्स्ट पार्ट. ही सेज, if you marry you will regret it, if you do not marry you will also regret it, if you marry or if you do not marry you will regret both. Laugh at the world's follies, you will regret it. Weep over them, you will also regret it. If you laugh at the world's follies or if you weep over them, you will regret both. Believe a girl, you will regret it. If you do not believe her, you will also regret it. If you believe a girl or you do not believe her, you will regret both. Hang yourself, you will regret it. If you do not hang yourself, you will regret it. If you hang yourself or you do not hang yourself, you will regret both. This, gentlemen, is the sum of all practical wisdom. तो एक एस्थेटिक इंडिविजुअल जो है ये एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, ये कॉन्फ्लिक्ट कांस्टेंट मिजरी के अंदर है. एंड ही इज़ क्रिपल्ड बाय हिज चॉइसेस, प्रेफरिंग टू एक्सपेरिमेंट विद लाइफ, एस्केपिंग द मोमेंट इनटू फैंटेसी. हिज एग्जिस्टेंस इज डिवॉइड ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि चॉइस इट सेल्फ डिफाइंस हिज पर्सनैलिटी. अब ऑन दी अदर हैंड जो एथिकल इंडिविजुअल है, ही इज़ presented with a different either or. He is presented with the either or situation between the aesthetic and the ethical, aesthetic or the ethical. He has to choose between the aesthetic or the ethical. उसके सिचुएशन में वो अपनी सिचुएशन के बारे में कह रहा है, I choose absolutely and I choose absolutely precisely through having not chosen to choose this thing or that.
तो जो एंग्जाइटी है विच कम्स विद हैविंग टू चूज़ बिटवीन टू वेरी सिग्निफिकेंट चॉइसेस इन लाइफ, वो उस एंग्जाइटी से अपने आप को डिटैच कर रहा है बाय एब्सोल्युटली मेकिंग वन चॉइस एंड बाय स्टिकिंग विद इट, दिस एथिकल इंडिविजुअल. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एस्थेटिक इंडिविजुअल है, whenever he is presented with a choice, he always regrets the choice that he did not make. And इसकी वजह से he's in a constant misery, even when he's pursuing the aesthetic, even when he's pursuing some specific instantiation of the aesthetic. If he's worshipping beauty, अगर वो एक embodiment of beauty को pursue कर रहा है, तो he will regret the other embodiments which he cannot in the moment pursue. So वो अपने प्लेजरफुल डिस्कोर्सेस के अंदर भी, अपनी प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मिजरी के अंदर है. ही इज़ गेनिंग लेस देन ही इज़ गिविंग बेसिकली. तो वो दोनों तरफ से नुकसान में है. जो एथिकल इंडिविजुअल है, हाउएवर, even when he is fulfilling his duty, even when he is agreeing to the social contract, he is not in misery. He is actually living a happy, fulfilling life. तो इस सब के बारे में जो जज है, जो बी है, वो बात करते हैं अपने सेकंड लेटर के अंदर, which he presents to A. Part 2 एंड होता है विद अ सरमन जो जज रिसीव करता है अपने एक दोस्त से. इस सरमन का नाम होता है, इस सेक्शन का नाम होता है द एडिफिकेशन विच लाइज इन द फैक्ट दैट इन रिलेशन टू गॉड वी आर ऑलवेज इन द रॉन्ग. इस सरमन का पॉइंट ये है कि हम इंसान, बेशक हमारी चॉइसेस एस्थेटिकली या एथिकली मोटिवेटेड हो, हम नहीं जान सकते कि हमने सही डिसीजन टेक किया या फिर गलत टेक किया. वी कैन नेवर बी श्योर इफ़ वी आर इन द राइट. सो only by accepting that God is always right and by trying to do God's will, by trying to do what God would require of us, can a person escape unhappiness. Now, Kierkegaard का जो मकसद था with writing this book, he was more interested in making us think than just plainly simply giving us answers. He encourages his audience to decide for themselves the merits of the various viewpoints presented. Now, some people might be, I don't know why I'm saying that again and again, but it might be tempting but incorrect to read either or as if ये एक explanation है of how to move from the aesthetic life into the ethical life. He doesn't do that. To be noted here is that Kierkegaard is very opposed to the Hegelian system. He's very opposed to the thesis and the antithesis and the synthesis that comes out of that. He does not assume कि ये जो चॉइस है ऑफ द एस्थेटिक इंडिविजुअल टू स्टेप इनटू द एथिकल इंडिविजुअल, ये एक रैशनल चॉइस है. इट डजंट एज्यूम दैट, ही डज नॉट एग्री विद दैट आइदर. ही सेज कि ये जो प्रोग्रेशन है ये एक बड़ी सब्जेक्टिव इंडिविजुअलिस्टिक प्रोग्रेशन है और इसका कोई एक वन कट आउट फार्मूला नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है जो वो अगर लिख भी देगा तो सब उसको फॉलो कर सकते हैं कि हाउ कैन यू जस्ट जम्प फ्रॉम द एस्थेटिक लाइफ टू द एथिकल लाइफ. देयर इज़ नो सोल्यूशन लाइक दैट बिकॉज Kierkegaard was a very individualistic, a very सब्जेक्टिव राइटर जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करता था और एक पर्सनल रिलेशनशिप विद रियलिटी, एक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड में यकीन करता था कि एवरी वन फाइंड्स देयर ओन आंसर्स थ्रू देयर ओन मेटामॉर्फोसिस, थ्रू देयर ओन प्रोग्रेशन इन लाइफ. तो उसने वो प्रोग्रेशन इटसेल्फ किताब में अधूरा छोड़ दिया. ही टॉक्स अबाउट द एस्थेटिक लाइफ एंड ही टॉक्स अबाउट द एथिकल लाइफ एंड he kind of leaves out the transformation or the progression between the two. He leaves out how you move from one to the other. Another thing to be noted here is कि किताब का नाम either or तो है, लेकिन either or some scholars argue that it isn't about the choice between the aesthetic and the ethical because both are necessary. ये जो either or है ये actually एक choice है between the aesthetic and the ethical and the religious life. यानी या तो you choose the aesthetic or the ethical life एक तरफ, या फिर you choose the religious life. Kierkegaard की नज़र में दोनों एस्थेटिक्स और एथिक्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में, लेकिन दोनों डिट्रैक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को फ्रॉम द रिलीजियस. दैट इज़ वाई जो आइदर और ये किताब है इट एंड्स विद दिस सरमन ऑन हाउ इन रिलेशन टू गॉड पीपल आर ऑलवेज रॉन्ग. दोनों ए और बी, दोनों ए और जज अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं, अपने केसेस पेश कर सकते हैं इस किताब में फॉर हाउ पीपल शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्थेटिक एंड एथिकल सिस्टम्स, देयर ओन सिस्टम्स. लेकिन एनी सिस्टम डिज़ाइंड बाय अ ह्यूमन इज़ नेसेसरीली फ्लॉड. Kierkegaard इस किताब में
द रिलीजियस को एक्सप्लोर नहीं करता, विच इज़ द थर्ड मोड इन हिज एग्जिस्टेंशियल डायलेक्टिक, लेकिन वो अपने कुछ और वर्क्स के अंदर द रिलीजियस को एक्सप्लोर करता है, सच एज Stages on Life's Way, which is the sequel to this book. It expounds on the religious life. आखिर में, to understand Kierkegaard, we need to understand his personal life as well, because किसी भी राइटर को जब आप पढ़ते हो तो you need to understand where they're coming from. You need to understand कि वो बात किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. अगर आपको नीचे पढ़ के उसकी बातें समझ नहीं आती हैं, so that might be partly because you do not understand his story, you do not understand his life, his circumstances. And if you read some of his biography before reading his work, you might be able to understand it a little better. इसी तरह Kierkegaard की जो majority of his work है ना, at least to me, I have been better able to understand his work when I understood one aspect of his life, which is the story of his love for Regina Olsen, उनकी जो affair था, उनका जो engagement था, and the breaking off of that engagement. Kierkegaard met a lady named Regina Olsen, and he pursued her for 2 years before he proposed and ultimately regretted the decision that he made. ये दोनों 1837 में मिले, and Kierkegaard तब एक student था. His liking for her was immediate. He pursued her as a friend and then as suitor before he confessed to her his true feelings. Kierkegaard ने either और ये किताब लिखी shortly after breaking off his engagement with her. Now, why he broke off the engagement? He basically in his journals वो लिखता है कि he had to break off the engagement क्योंकि he thought कि जो उसकी अपने साथ एक intellectual duty है, his intellectual duty to his work, to himself, would be superseded by the ethical duty that he had to his partner. उसकी कुछ obligations होनी थी if he married Regine, जो उसको fulfill करनी पड़नी थी, because the universal, the ethical demanded that from him. लेकिन साथ ही साथ he had some intellectual duties to himself and to his purpose in his life, which he had to fulfill. And God himself demanded that he fulfill that purpose. So he himself was stuck in that either or. This book might itself be Kierkegaard's own personal either or situation, his own confusion, which made him write this book. वो ये भी मानता था कि he as a person, as a writer, and the purpose that he had, all of these things would be torturous for his partner, because in his own words, quote, there was something spectral about me, something no one can endure who has to see me every day and have a real relationship with me. He also believed कि उसका एक divine purpose था, उसकी एक calling थी, उसका एक religious task था, which he had to fulfill in his brief time here on earth. And he had to do that, and so वो अपने आप को किसी specific person, एक specific commitment या obligation से bound नहीं कर सकता था, because that would prove to be a hindrance for his own spiritual journey, but also for the other person's journey, जिसके लिए वो उनके हालात मुश्किल कर रहा है, because he's not such an easy person to be with. He died young in his 40s, I believe. He died at the age of 42, and on his deathbed he said, quote, "She was the one I loved. My existence must unconditionally accentuate her life. My writing should be considered a monument to her honor and her memory, and I carry her with me into history." Kierkegaard अपनी एक और किताब रेपुटेशन के अंदर एक आदमी की कहानी बताता है, a young man who abandons his fiancée without an explanation because he feels that God has forbidden the marriage. In this, he seems to be commenting on his own breakup with Regine. इस किताब में ये जो शख्स है, he never fully becomes religious. He doesn't, despite giving up his one true love for the sake of his relationship with God. Instead, वो एक kind of a spiritual poet बन जाता है. Fear and Trembling में, like we've covered in one of our previous episodes, which was published the same day, his book, he seems to be commenting less directly on his own broken engagement, using the idea of Abraham sacrificing Isaac. इन दोनों किताबों में जो focal character है, वो एक ऐसा शख्स है जो ethically और religiously एक sanctioned relationship को with another person उसको sacrifice कर रहा है in place for what God requires of him, in place of what God demands of him.
So this is some kind of a theological description of faith. एक psychological expression है Kierkegaard की अपनी engagement का, जो उसकी काफ़ी books के अंदर apparent है. Like Abraham offering Isaac to God. Kierkegaard अपने journals में describe करता है how he gives up his engagement, yet somehow उसके दिल में ये hope होती है कि somehow God will intervene. जिस तरह when Abraham was about to sacrifice Isaac, God stopped that, God prevented that, and instead presented a goat to be sacrificed in place of Isaac. उसी तरह Kierkegaard को ये उम्मीद थी कि अच्छा I would sacrifice my love for God and somehow God would intervene, or God ये होने से बचा लेगा, he would return my love to me, but that never happened. But at another point अपने जर्नल्स में वो ये भी कहता है कि अगर तो उसके दिल में रियली फेथ होता, एक्चुअल फेथ होता, तो he would have stayed with Regine and he would have allowed God to make him a fit husband while also being a Christian. वो शायद वो अपना पर्पस और अपनी ethical obligations such as marriage and his duty to his partner, इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेकर शायद चल सकता था. He never really experimented with that. Like this aesthetic individual experiments with his entire life and ends up regretting. तो ये dilemma जो है, इस confusion के अंदर Kierkegaard खुद almost all of his life फंसा रहा, and that is apparent in most of his writings, especially his journals. So that was it for this video. Again, I again mention here कि ये जो short videos हैं, I make this basically for myself. When I read or when I reread a text, तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट समरी बनाकर पोस्ट कर देता हूँ, just to serve the purpose of coming later in my life back to them so that I can review what I've read, some of what I could or would potentially forget. And these are just short summaries. They should not be a substitute for reading. So you should definitely read the original text. You should read Either Or by Kierkegaard, and you should also read Fear and Trembling.